Hello, welcome everybody. My name is Avinash, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, in these episodes, we talk to you about emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the senior management teams of such companies. And today, friends, we've got a very interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Alpex Solar Limited, and we have the privilege of having the management team with us. We have Mr. Ashwini Sehgal, who's the promoter and the CEO of the company. Welcome, Ashwini ji. And we also have Mr. Satish Gupta, who's the CFO of the company. So first of all, both of you, thank you very much for sparing your valuable time with us. I'm pretty confident that in this small interaction we'll be able to understand the company's operations in a much better way for all our investors. Sure. Yeah. Thank you, Avinashji. Yeah. And as already told, I'm Ashwini Saigal from Alpex Solar Limited, and with me, our CFO, Mr. Satish Gupta, is already there. Okay. So we, as explained, or maybe you might be knowing, so we are a manufacturer of solar panels for almost now 16 years we have completed, and we have this kind uh, some kind of nice history. Yeah. So, Ashwini ji, my first question to you is, I mean, if you could tell us something about your business journey, how did you get into this business? And currently, what is the positioning of Alpex Solar in the domestic solar panel market? इसके बारे में सर थोड़ा बताइए, so that we can understand, your thought process and the company's operations better. देखिए, कंपनी वाज स्टार्टेड वे बैक इन 1993, बट उस समय हम ट्रेडिंग में थे। बट एक्चुअल सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2008 में स्टार्ट हुई। वी स्टार्टेड द फर्स्ट फैक्ट्री इन बद्दी, वेयर इन वी स्टार्टेड एक्सपोर्ट ऑफ सोलर पैनल्स टू इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, एक्सेट्रा, बिकॉज एट द टाइम Indian market was not ripe and there was no policy support from the government, and the solar panel prices are also were very, very high. So we started with the exports, and by the we entered German market and other markets, and we got very good results at those times. And incidentally, we got seventh position in the worldwide ranking in our solar panel by Photon Test Lab in Germany, wherein all large manufacturers from China, Italy, Japan, they participated. We were placed number 7. Okay. So I think very From nice that, to know, Ashwini ji. I think that thank you. you all are ranked Thank you. seventh globally, जो बहुत अच्छी बात है. अश्विनी जी, Thank एक you. सिंपल क्वेश्चन है जो टेक्निकल है, जो मुझे लगता है आप मुझे हेल्प करोगे. आई वाज रीडिंग योर प्रोस्पेक्टस, सो ये मुझे बताइए कि काफी इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हमारे सोलर पैनल में जाते हैं अपार्ट फ्रॉम सोलर सेल्स. इसमें Right. काफी कंपोनेंट्स होते हैं, तो इफ यू कैन टेल अस व्हिच आर द कंपोनेंट्स व्हिच द कंपनी मेक्स इन हाउस, और कौन से कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि मुझे जानना है कि हाउ इम्पोर्ट सेंसिटिव इज आवर बिजनेस, और इसमें हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और सेल्फ रिलायंट बनाएं. Right. तो इसमें ये है कि जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट 80 to 85% कंपोनेंट्स वर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बट ड्यूरिंग दिस आत्मनिर्भर भारत एंड जब से मोदी जी, सॉरी, आई मीन द बीजेपी गवर्नमेंट केम इनटू पावर, सो दे हैव गिवन द सपोर्ट एंड दे वांट मैन्युफैक्चरिंग टू हैपन इन इंडिया. सो एट दिस मोमेंट प्राउडली वी कैन से that almost 85% of goods are being manufactured in India. Though we are buying from outside also, but now we are hardly import reliant. ओके. So we can still manufacture the solar panels using all Indian components. ठीक है. एंड हम मैन्युफैक्चरिंग में सोलर पैनल बनाते हैं और एक सोलर फ्लेम में हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं. एंड फ्यूचर में हम जंक्शन बॉक्स में भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे. अश्विनी जी, अभी थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताइए. आप सोलर पैनल भी बनाते हो, सोलर पीवी मॉड्यूल भी बनाते हो, तो करंटली हमारा जो रेवेन्यू मिक्स है उसमें अगर मैं सोलर पैनल लूँ, पीवी मॉड्यूल लूँ, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से दूसरे एक दो प्रोडक्ट्स भी मैं आपके प्रेजेंटेशन में देख रहा था. तो हाउ इज द पोजिशनिंग, लाइक गोइंग फॉरवर्ड, विल आवर फोकस बी लार्जली बी ऑन द सोलर पैनल बिजनेस, but also we'll be taking up some EPC projects where we'll be giving the customer a integrated kind of package. तो इसके बारे में बताइए. What is your thought process? आगे चल के can we expect a complete EPC package given by you, so that you get better margins, you get a kind of a better valuation for your company? देखिए अविनाश जी, ऐसा है कि सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल एक ही चीज के दो नाम है.
and अच्छा but we are into solar pumps also, अच्छा which is a kind of EPC we are already doing for the last 6 years. So we have ओके ample experience. Solar pump जो है और rooftop जो EPC है या standalone EPCs है वो सब similar ही है. So we have ample experience, and going forward we have already started planning for having our own rooftop business and as well as C&I and other form of EPC. तो ये ओके हमारा पूरा प्लान है और ये चालू कर रहे हैं, और अब वंडरफुल। सिंस वी ऑलरेडी हैव गुड एक्सपीरियंस, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती हम. But yeah, I think this is a very good positive, part about Alpex Solar. Now tell me one thing, sir. Normally जब हम solar panels, customers को देते हैं, तो इसमें कोई pricing कैसे decide होती है? Like, is it like based on the market price of the raw material inputs and based on the order size, based on the configuration that you finally decide the the average selling price for the customers, or is it decided in advance? अगर कोई bulk customer है, तो इसके लिए आप क्वांटिटी के हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि इतने प्राइसिंग में जाएगी। तो मोटा मोटी सर प्राइसिंग हमारे इंडस्ट्री में कैसे काम करता है और हमारी कंपनी कैसे ऑपरेट करती इसमें देखिए, जहाँ हम जो ऑर्डर जो मार्केट से उठाते हैं उसका तो मंथली बेसिस पे प्राइसेस नेगोशिएट होते हैं बेस्ड ऑन आवर इनपुट्स, एंड जो ईपीसी बिजनेस है या जो सोलर पंप का जो हमारा बिजनेस है जिसमें हम टेंडर खुद उठाते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रेडा से या पेडा से, जो भी स्टेट रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसीज है, वहाँ पे प्राइस एज पर द टेंडर फिक्स हो जाता है, और जो कि 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए वैलिड रहता है. है? तो बेसिकली प्राइसिंग जो टेंडर का होता है इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द टेंडर टू द एजेंसी और उसके हिसाब से जो सबसे सस्ता टेंडर होता है उसके हिसाब से आपको ऑर्डर मिलती है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। जो टेंडर का जो प्राइस है वो पहले टेंडर में फिक्स हो जाता है, जैसे कॉम्पिटिटिव बिडिंग है, उस हाँ। बिडिंग में इफ वी क्वालिफाई, फर्स्ट हम टेक्निकली क्वालिफाई करते हैं एंड देन उसमें आपका अगर फाइनेंशियली अगर वी आर वी विन द टेंडर, देन दिस प्राइस इज वैलिड फॉर अ ईयर और समटाइम्स इट इज वैलिड फॉर 2 years आल्सो. अच्छा नाउ अश्विनी जी, ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी अभी सभी को पता है कि मोदी जी ने ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत बड़ा फोकस अनाउंस किया है। अभी अयोध्या राम मंदिर के बाद भी उन्होंने बोला कि 1 करोड़ घरों को वो सोलर रूफटॉप्स करेंगे। तो आपके हिसाब से अगले 3-5 साल में व्हाट इज द काइंड ऑफ रनवे ऑफ ग्रोथ फॉर आवर कंपनी? बिकॉज सोलर पैनल में तो काफी लोग हैं, थोड़ा कंपटीशन भी है, लेकिन इफ यू लुक एट द वॉल्यूम अपॉर्चुनिटी, सर कैन वी से दैट टुडे वी आर क्लोज टू अबाउट 200 crores टॉप लाइन? can we say that this business has got a very strong runway over the next say 3-5 years? तो मोटा मोटी सर हम लोग आराम से 20-25% हर साल कंफर्टेबली ग्रो करेंगे। आई मीन आई डोंट वांट टू टेक अ नंबर बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट यू ऑन अ स्लाइटली एम्बैरेसिंग नोट, बट सर कम से कम अपॉर्चुनिटी साइज हमारे लिए कितनी बड़ी है और हम कितना उसमें से मार्केट शेयर ग्रैब करें? देखिए अविनाश जी, ऐसा है कि ये बिजनेस में अभी तक 80% पैनल्स इन चाइना से या बाहर से आ रहे थे, और ओनली वी वर बेसिकली केटरिंग टू दी वॉट एवर वॉज लेफ्ट, और वो 20% या 15% ही था. अब अंडर द आत्मनिर्भर भारत, द गवर्नमेंट हैज मेड अ वेरी क्लियर पॉलिसी दैट द पैनल शुड बी मेड इन इंडिया, और वो लगने हैं. तो अब ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड कस्टम ड्यूटीज ऑन द पैनल्स, और there is another पॉलिसी मेजर विच इज ALMM, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है. तो उससे ये होगा कि द डिमांड इज गोइंग टू skyrocket, and at the same time, yes, I know the competition will be there, but हमारे लिए जो order book position है, because of our experience and relationships, and this is a technical product. ओके, ओके। इसमें क्वालिफिकेशन प्रोसेस रहते हैं. हमारी फैक्ट्री फॉर एग्जांपल एनटीपीसी ने अप्रूव करी है, टाटा ने अप्रूव करी है, और अदर लुमिनस ने अप्रूव करी है, ठीक है ना. तो हमारे को इसमें ज़्यादा कोई इशू दिखता नहीं है. और जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, मैं ये कह सकता हूँ कि हम भी नंबर नहीं देते, बट ये जो जो फिगर्स आज की डेट में दिख रही हैं, ये हिस्ट्री बन जाएंगी, और इसमें काफी बड़े बड़े नंबर्स आपको दिखेंगे. बिल्कुल, बढ़िया। अश्विनी जी, नाउ यू मेंशन्ड समथिंग अबाउट सम प्रोमिनेंट कस्टमर्स। अगर आप थोड़े प्रोमिनेंट जो आपके मार्quee कस्टमर्स हैं, जो यू ऑल आर एम्पैनल्ड विद देम, इफ यू कैन शेयर सम फ्यू नेम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स। लुमिनस इज वन ऑफ आवर स्टेडफास्ट कस्टमर. देन बीवीजी है, एक सोलर वर्ल्ड के नाम से है. देन हमारे इनडायरेक्टली हम एनटीपीसी को देते हैं थ्रू ईपीसी अनदर ईपीसी ओके, कंपनी. ओके, एक्शन इज अ गुड रिलायबल कस्टमर फॉर अस.
इस तरह से देन आपका पंप में हमारे पास हरेडा है, पेडा है और क्रेडा भी है। राजस्थान में क्या नाम है उसका, जो राजस्थान की जो एजेंसी है, ठीक है। सो दीज आर द एजेंसीज आर देयर। एंड नॉर्मली अश्विनी जी, ये जो कस्टमर बेस है, ये पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, यानी आई जस्ट वांटेड टू ऑन एन एवरेज व्हाट इज द एडिशन टू न्यू क्लाइंट्स, यानी हमारी क्लाइंट एडिशन कितनी हेल्दी है? देखिए, वी आर कंटिन्यूअसली एडिंग न्यू न्यू क्लाइंट्स, और वो जैसे जैसे हमारी सेल्स टर्नओवर बढ़ रही है उसी तरह से क्लाइंट बेस भी बढ़ता जा रहा है। एंड बिल्कुल। सून हमारा एक्सपोर्ट भी स्टार्ट होने वाला है, और उसके लिए ऑलरेडी डायरेक्टर फॉर एक्सपोर्ट्स ही हैज बीन रिक्रूटेड, एंड वो भी चालू हो जाएगा, तो हमारा टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों काफी। अश्विनी जी, अभी मेरे को बताइए कि सर हमारे इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो सोलर पैनल के लिए जो रॉ मटेरियल है वो सोलर सेल है, और जो मेरे ख्याल से अभी इंडिया में बनता नहीं है। तो इसके बारे में सर आपका क्या ख्याल है? विल द इंडस्ट्री बी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, और इंडिया में भी इसकी अवेलेबिलिटी अभी स्लोली स्लोली बिल्डअप हो रही है? इसके बारे में कुछ बताइए। India has been producing solar cells for quite some time, एंड 2017 में हमने विद इन इंडिया हमने ऑलमोस्ट 240 करोड़ के सेल खरीदे थे एक साल में, ओके। और मेड इन इंडिया सेल्स थे, बड़ी अच्छी क्वालिटी, और कोई ऐसा इशू नहीं है। और एट द सेम टाइम नाउ लॉट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इन द सोलर सेल बिजनेस, और एक साल में एज पर एमएनआरई डेटा वी विल हैव 12 गीगावाट ऑफ सोलर सेल्स विच विल बी मेड इन इंडिया। एज ऑफ नाउ ऑलरेडी 3.5 गीगावाट की कैपेसिटी लगी हुई, विच इज वर्किंग तो हमारे एट प्रेजेंट। लिए ऑल्सो वी आर बाइंग लॉट ऑफ लोकल और सेल्स। आवर कंपनी, अश्विनी जी, हम सोलर सेल्स कहाँ से लेते हैं? वेदर वी आर आइदर टेकिंग एंटायरली फ्रॉम डोमेस्टिक हमारे और इंपोर्ट भी करते हैं? हाँ, हमारा ऑलमोस्ट मोर देन आई थिंक 50 to 60% जो सेल्स हैं वो हमारे डोमेस्टिक लेते हैं, और 30 to 40% या 40% के करीब वो हमारे बाहर से आते Okay, so basically you all are fairly insulated because this is a very हैं। important अभी यहाँ, हाँ जी, हाँ that's जी। और yeah, that is ये, और एक साल बाद आप दूसरे होराइजन में देखेंगे तो एक साल बाद देयर वोंट बी एनी नीड टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। okay. No, I think good to know. I think now Satish ji, sorry for keeping you waiting for a long time. No Satish ji, worries. now I just wanted to understand, the financial year FY23. I was seeing the numbers, and then FY24, whatever numbers have been reported in the prospectus. There's been a massive jump in your profitability, especially the profit after tax for FY23. Now, first of all, Yeah. I want to understand, what has been the key reason for this sharp profitability? Was there any some abnormal event which happened in FY22? So, the base was low. And in the current year, profitability for FY24, again, profitability has jumped significantly. Now, any specific reasons why these numbers have improved, and what is the sustainability of these numbers going forward? I think as Ashwini just mentioned, I think now it's the solar period. I mean, we also hear Prime Minister Modi to really announce 1 crore rooftop installations. And as is, there are big targets by the government of India, right? So by 2030, they are saying renewable energy installations to touch about 500 gigawatt, right? So there is ample business now in India. And if you really see between 23 and H1 24, in 23, we had touched about 186 crore of revenue, right? And however, sorry, 183. And however, in H1 itself, we had crossed 200 CR, right? So within half a year, we could do much more than what we did in the entire FY23. And we foresee, as Ashwini just mentioned, that this space has to continue because there is a lot of excitement of solar in India. So we are very hopeful that this will continue. And on your other point of why profitability jumped, it is not a one-off situation. I think everyone knows when there is a better utilization, when the turnover increases, your overhead and other costs keep going down as a percentage. And I think this is the result what we see in our bottom line today. Okay, now understood. Satish ji, now tell me one thing that, in terms of your working capital management, because, working capital is a very crucial
part of a Yes. solar panel company, because a lot of inventory needs to be stored, your collections have to be monitored. Now tell me one thing. I was just seeing the last 2 years, your operating cash flows have been pretty solid. In fact, in the year FY24, operating cash flows have become very solid and positive. Now, typically, how do you manage your working capital cycle? What is the normal time from the time you get the order, you execute it, and you get the money from the customer? What's the normal working capital cycle in our business? So in nutshell, if I say my working capital cycle is about 39 to 40 days time today. Earlier it was much more. And in fact, the reason being that historically, since the market was low, we were going more behind the audits, right? And as Ashwini said, or effective 1st April 22, there was a custom duty which was imposed, right? That had really slowed down the manufacturing in India as against what it should have grown actually. Okay. But the reason was that this announcement came much before the 1st April. It was not a sudden announcement. So a lot of big developers, they had imported huge quantities to take advantage of that position, which affected our H1 of FY23. Okay. Right. So thereby my turnover was low, and I was compelled to give almost or keep a lot of inventories with me, which today is not the case. Today it's a steady business. I mean, we buy inventory what we have audits, and that is why we foresee that this process to continue, and about 40 days should be. Can I add a little bit in this? Yeah, Ashwini ji, please. Yeah. So, because we have been able to diversify and we have been able to reduce the import of components, our working capital cycle is also reduced. So now That's majority of the components are coming from within India. Okay. So Yes. उससे भी आपका फर्क पड़ जाता है. So that too is because otherwise the sailing time itself to import from China had been large, so that increases my working capital side. No, understood. I think Satish ji, now tell me one thing. I was reading that the company plans to expand its capacity now, almost double its capacity. From 450 megawatts to something like almost doubling of this. 1.2 gigawatt. So now tell me one thing. What is the timeline for this expansion to get commissioned, and what is the broad capex which is going to be involved? इसके बारे में बताइए, and how do we plan to fund it? Sure. So today, as you mentioned, that we have about 450 megawatt of capacity, installed capacity. We want to add 750 megawatt to make a total capacity to 1.2 gigawatt, right? This capacity is going to come on our existing facility in Greater Noida, right? And facility, we still have space where we can install a lot of, or we can go up to almost 2 gigawatt in the same area, out of which we are only doing or scaling up to 1.2 gigawatt. Okay. So we largely are saying that we need only the equipments to increase our capacity, right? So in this today, what we are saying is that we want to invest about 24 crores into our equipment for expansion and modernization of our module plant, right? Out of which almost 4.4 crore is something that we are using our own funds or arrangements to fund this, and balance about 19.55 crore is something that we are left with, for which we will be using funds from our IPO fund. Okay, understood. And this will be a brownfield expansion. Am I right? Yes. Not really brownfield, but as I mentioned that, since it is into our existing facility, yes, you can. Okay. Now, Ashwini ji. And in addition to this, as Ashwini mentioned some time back, we are also going in for backward integration of aluminum frame, right? Because we consume a lot of aluminum frame into our manufacturing process. Okay. And there also we are going to invest about 13 CR Okay. for our backward integration. So, Satish ji, just an added question to this. Once you're going in for this backward integration, so can we assume that once this facility is stabilized, and since it's a critical input for you in the final product,
can we expect some improvement in the operating margins? Because obviously what you make internally will be obviously more cost effective. So can we expect some improvement on the EBITDA margins going forward? You're absolutely right, Avinashi. In fact, that was the intent. It will give us two benefits. One, that we will have more control on one of our major raw materials, which goes to my module manufacturing. And two is also it gives me a better bottom line. So in today's scenario, the moduling, the frame cost is about 10% of my total cost. And we expect that we would be gaining on an average about 10% of our frame cost within this. Okay. So it is going to further help me in improving my bottom. Okay, understood. Satish ji, मोटा-मोटी timeline क्या रहेगा? From when can we expect this advanced, this incremental capacity, Sure. this aluminum frame? Sure. So as far as and I think Ashwini needs to further correct me if I'm somewhere wrong on the timing. I think as far as module expansion is concerned, I think we should be comfortable by Q1 of FY25. So which means by June 24, we should be more or less ready with our module expansion. However, aluminum will take still a little longer, and we expect maybe by the year end, FY25, we should be reasonably there. Okay. So basically, the first quarter you will be able to expand the module capacity. This 450 will become मोटा-मोटी कितना तक जाएगा? I mean, if you can just So we are adding 750 megawatt over 450, so it would be 1.2 gigawatt or 1200 megawatt. So this will be completed hopefully by June, July 24, right? Yes, that's what I want to confirm. Okay. Okay. Ashwini ji, now important question from the market perspective. We keep talking to a lot of companies. Tell me one thing, what is the differentiating factor for Alpex Solar? We make solar panels. वैसे तो काफी लोग solar panel बनाते हैं. हमारे धंधे में हमने ऐसा क्या किया है कि customer is happy with us, order ज्यादा आते हैं. So हमारा competitive moat क्या है? हम कैसे customers को पकड़ के रखते हैं, नया business लाते हैं. So if you can share your thoughts as a promoter, how you have managed to satisfy customer expectations. So while we are the only manufacturer who is in manufacturing for the last 16 years now. We have completed 16 years of manufacturing. So we have a export portfolio as well as domestic customers. And these are repeat customers. They have been working with us right from the day one. So they have generated some kind of confidence because it's a technical product. Not everyone people can start me too kind of a business. There are people who are starting me too, but it needs a lot of experience, expertise, and depth in manufacturing understanding. And number two, since we've been manufacturing these panels for the last 16 years, हमारे को manufacturing का इतना inside knowledge आया है कि हम, for example, we do not buy on a turnkey basis. And end up saving on capex also. 25 से 30% हमारा उधर से बच जाता है. और then at the same time, because we are in the market for the last 16 years, so all the vendors, they know us. So we get a better pricing mechanism also. And at the same time, I am the president of Indian Solar Manufacturers Association for the last 11 years. And we have deep connection with the industry and with the government bodies. एंड उसमें हमारे को जो नॉलेज चाहिए इस बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए वो सारी नॉलेज हमारे पास है और एक्सपीरियंस तो है ही. अश्विनी जी, अभी थोड़ा सा मेरे को ना आप बताइए कि हमारा जो रेवेन्यू आता है उसमें से ज्योग्राफिकली विच एरियाज आर वी डोमिनेंट? बिकॉज आई अंडरस्टैंड द हॉट स्टेट्स लाइक राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहां से सोलर की ज्यादा कैपेसिटी आ रही है. सो वेयर आर वी प्रेजेंट नाउ एंड आगे चल के सर हमारा प्लान क्या है? कौन कौन से स्टेट्स में जाके हम लोग कस्टमर्स को केटर करेंगे? देखिए, हम मेजरली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा काम करते हैं, बट विच इज़ क्लोजर टू दी कंजम्पशन एरियाज. फॉर एग्जांपल राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, या अप नॉर्थ में जितने सारे जगह पे हैं. ठीक है, बट यस, वी हैव इंस्टॉल्ड लॉट ऑफ सोलर पैनल इन एनएलसी डाउन साउथ. चेन्नई में भी हमने काफ़ी मटेरियल डिलीवरी करी है. अभी भी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वो हैदराबाद के आसपास चल रहा है.
ठीक है। Okay. यस, आने वाले टाइम पे इट विल बी बेटर दैट सम मैन्युफैक्चरर्स आर क्लोजर टू दी कंजम्पशन स्टेट्स, तो हमारा उसमें ज्योग्राफिकली एडवांटेज भी है हमारे को, Okay. क्योंकि राजस्थान हमारा नेक्स्ट डोर है। Okay. मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी है। यूपी इज गोना बी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड Yeah. यूपी में इतनी ज्यादा डिमांड आने वाली है कि, बिल्कुल. एंड वी आर इन यूपी मैन्युफैक्चरिंग इन यूपी। Satish ji, now something on the broad metrics of the forthcoming public issue. If you can share some inputs on the IPO, because that is what the investors would like to know. What is the size of the IPO? What is the timeline? And typically, what is the main objective? As you said, one is of course putting up that incremental capacity, but any other purpose for which the funds are being raised. So if you can share your inputs. Sure. Sure. So one, that the IPO size would be in the vicinity of around 75 CR, right? And as far as the utilization of this money is concerned, as there would largely be 3-4 areas where we would be using this money. So one, as I said, there will be expansion and modernization of solar module line, which will be where we will use about 20 CR. Then in frame business, aluminum frame business, we will be consuming about 13 crores, right? We expect, since our business is growing, we expect more money required into our working capital. So it would be about 20.5 crores that we would be using this. Okay. And so this is largely the big ticket items where we'll be consuming this money. Fine. Ashwini ji, now one question which I wanted to ask you, from the investors' perspective, you have been instrumental in setting up this company. You all have been very, very micro, related to this sector. Now, for the new investors who are going to come and join you in your growth journey, what would be your broad message to them? Because see, obviously, everybody wants to, have a very good risk reward in the capital markets, and I'm quite sure, you would definitely deliver their expectations. बट ब्रॉडली सर, आपको नए इन्वेस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करके वो कैसे बेनिफिट कर सकते आज जी ऐसा है, हम 16 साल से पैनल बना रहे हैं, ठीक है, और वर्ल्ड नोज अस, और वी हैव डिलीवर्ड टू ऑल द लार्ज आईपीपीस, फॉर एग्जांपल एनटीपीसी, एनएलसी, एसएलसीसी, आपका कोल इंडिया, सबको हमने मटेरियल दिया है, और इनके साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, और इनसे काफ़ी बड़े-बड़े ऑर्डर्स अब आ रहे हैं, आएँगे, आते रहेंगे, और स्काई इज़ द लिमिट, एंड वी आर क्वाइट बुलिश अबाउट दिस बिज़नेस। और जो इन्वेस्टर्स आएँगे, दे आर वेलकम एंड दे विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, ये हम हाथ जोड़ के उनको कह सकते हैं। हैं? बिल्कुल. एवरीबॉडी अच्छा, इज़ वेलकम टू इन्वेस्ट इन। अश्विनी जी, लास्ट क्वेश्चन जो मैं हर प्रमोटर को या, पूछता हूँ, हालांकि ये नॉर्मल हाँ एक जी। क्वेश्चन होता है कि सर, हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? हमने इतने सालों तक कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिखाया है, अभी कोविड हो गया, कोविड तो एक नॉर्मल इवेंट था, सारे लोगों को इम्पैक्ट कर गया, लेकिन हमारे नॉर्मल बिजनेस में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल विच यू गॉट टू कीप वेरी स्ट्रांगली अंडर योर कंट्रोल, एंड हाउ हैव यू मैनेज दिस रिस्क सक्सेसफुली इन द बिजनेस? इफ यू कुड जस्ट लेट अस नो. इसमें what I feel earlier the biggest risk was the government policy. The government policy was not supporting the manufacturing of solar panels or solar cells in India. But after this policy shift from 1st of April 2022 and Atmanirbhar Bharat, the government has mitigated all those risks vis-a-vis policy support by the government. So that issue is sorted as of now, but if there is a policy shift कभी हुई आगे जाके, तो yes, we stand to थोड़ा उसमें रिस्क लगता है उसमें, ये अदरवाइज बिल्कुल सर। अदरवाइज मोटा मोटी जैसे अश्विनी जी आप बोल रहे हैं कि ऐसा कोई प्राइमरी रिस्क बिजनेस में नहीं है, बिजनेस इज ग्रोइंग स्टेडली, तो ये पॉलिसी रिस्क का ही एक फैक्टर है, अदरवाइज एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑन द रनवे, ग्रोथ के लिए कोई अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है. तो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. इज इट राइट? बिल्कुल सही बोला जी, आप बिल्कुल सही बोला, और ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, और अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मारे तो नुकसान कर सकता है बट शायद हम वो नहीं करेंगे, हमको इतना नहीं, पता है पैर हमारे कहाँ है। नहीं, नहीं, बिल्कुल. आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक बोथ यू अश्विनी जी, सतीश जी. I think we had a very small but very nice interaction. Friends, if you like the video, please like and share it.
And once again, Ashwini ji, Satish ji, best wishes to you, your entire management team, and best wishes for your forthcoming IPO. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Avinash ji. Thank you very much.